So welcome to the first Ctet class for cognition. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पेडागोगी के सब बहुत इम्पॉर्टेंट कंटेंट्स को पढ़ेंगे, समझेंगे. आई होप दिस वेटिंग फॉर एवरीवन टू ज्वाइन. Now look it, if somebody will be asking you कि cognition के बारे में कोई अगर पूछे या फिर ये सवाल करे कि what is that and pedagogy के different sections है, hierarchy. Now look it, pedagogy का ना बहुत सारे sections है. इसमें एक important है कि child development. चाइल्ड डेवलपमेंट में हम कैसे आंसर्स करें क्वेश्चन को, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है. मीन्स कैसे हम सारे क्वेश्चंस को अपेयर करें, कैसे हम क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड करें, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है. तो उसमें से ना एक सेक्शन कोग्निशन है. कोग्निशन का मतलब क्या होता है शर्मिला है? तो वहाँ पे ना कोग्निशन में चाइल्ड का जो मेंटल कैपेसिटी होता है, उनका अंडरस्टैंडिंग होता है, उनका स्किल जो होता है. इफ़ यू विल बी विशिंग आई विल बी एक्सप्लेनिंग इन हिंदी एंड इंग्लिश बोथ. तो यू नीड टू टाइप मी कि आपको कौन सा सेक्शन में ज़्यादा आप कन्वीनियंट हो. ओके तो एक एक करके हम सारी चीज़ों को समझेंगे और उससे बेस्ड क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे. ठीक है. गुड इवनिंग बेंसी. सो नाउ लुक एट, फर्स्ट थिंग इज कि हम इंग्लिश में बात करें कि हिंदी में बात करें. आप सब मुझे बताओ कि कौन सा वे में आपको इंग्लिश प्लीज. ओके फाइन. सो राखी, इज एवरीवन कन्वीनियंट विथ इंग्लिश? इंग्लिश हिंदी मीन्स आई विल बी मिक्सिंग बोथ ऑफ दैट and teaching so that you will be able, okay, you will be able to understand the entire content. Okay, so now, so yes, okay, Hindi, English, whichever you will be convenient with, we will be discussing in that. So first thing is that English. Okay, fine. So now look here, three variables in social cognitive theory. They are said to be interrelated with each other, causing learning to occur. See, the entire pedagogy is based on what? The entire pedagogy is based on understanding a child mind. Okay, now one child is not connected to only one family. The child is connected to social environment. Means social means what? The nearby surrounding where the child is growing, that comes the social part, the environment where the child is interacting. Okay, तो समझना है कि what we have to understand that कि the entire sections are correlated. Got it? So now first section, three variable in social cognitive theory. So what are the three variable? They are interrelated. Understood? So environment तो एक part आ गया. ठीक है, environment is one part. So now for cognition we will talk about some of the most important point. Now you will be asking that what are the three variables? Okay, so can you tell me the three variables you think? What can be the three variables? You interact. What can be the three variables in social cognitive theory? What can be the three variables? And they are interrelated. And they are what? Interrelated. Can you tell me? Think and inform me. Can you tell me that what can be the three variables? राखी, वो कौन सा तीन वेरिएबल होगा कॉग्निटिव थ्योरी में जो सोसाइटी में इंटर रिलेटेड है? चाइल्ड बिहेवियर, वेरी गुड. नेक्स्ट, try, at least try. What do you think is most important? Because pedagogy exam आपको देना है, you have to write the exam. So please. So the most important three things are, very good, yes, at least you have tried. Yes, Sahai, can you tell me, is it yes, male or female? If any name is there.
So first is child behavior. So that is behavioral factor. Very good. Next is environmental factor. Environmental factor is also one of the most important thing. Third is personal factor. Third is, that is child learning from family. And that is, see, look here, it is not only the child learning from family. You need to understand one more thing. The child is learning from themselves also. Okay, so look here, if I am giving a toy to a child, then how the child is behaving, that's also one of the most important thing. See, they will take the toy, they will try to place the Ruchi. Hi Ruchi. Now look at, they will take the toy and they will try to place the toy here and there. Okay Ruchi, so what they will do is, they will take the toy and they will try to place the content in the toy, and then they will be trying to, okay fine, this toy is like this. That is called as personal behavioral factors. Okay, so the three important sections are, in behavioral factors means, first the social means, first behavioral factor is coming. Okay, second section in environmental factors will come. Third is personal factors. Okay, so now we are going to understand an individual's personal experience can converge with the behavioral determinant and the environmental factor. Yes, so it's a binding theory. It's a binding theory. Understand, we not only interact with our family, we interact with our surrounding. In surrounding, nature is there. In environment, what and all factors we are adding? We are adding nature, we are adding neighbors, we are adding business. Every factor that is around a person will be inclusive, and that's why it is considered as determinant. Understood? Determinant, why? Because it is exactly going to give a wholesome information about the personal and the surrounding section. Understood? Now the next important section, when diagram shows behavior, personal factor, cognitive effect and biological and environmental factor are all interlinked by bidirectional. So I'm going to draw a diagram, and the diagram will be exactly explaining you this part. So you need to draw the diagram. Okay, so let's draw the, I'm drawing the diagram. In your note, please kindly draw this diagram. So please kindly draw this diagram in your note. So how the behavior, so this is behavior and behavior of a child. So behavior of a child, how it is exactly interactive. So first is personal factor. Okay. Now personal factor is interlinked. Interlinked means it will go unidirectional. No, it is go dual direction. Means behavior, me, and it is going to you. Means how I have learned from the surrounding, पर्सनल एक्सपीरियंस आई एम गोइंग टू रिफ्लेक्ट टू यू. ओके, जो मैंने सराउंडिंग से सीखा वही मैं आपके साथ रिफ्लेक्ट करूंगा. मतलब कि इफ आई लर्नड हाई फ्रॉम माय पेरेंट्स, when you will meet me, I will say hi. I will not say welcome. I will say hi. Because why? Because I learned hi from my family. Understood? So my personal experience is hi. Then I will say hi. Understood? Now this personal factor will be totally interlinked with environmental factor. See, the arrows are going and returning. Why? Because it's a total interlink. इसको समझो ऐसे कि ये आपस में मिलते जुलते हैं, क्योंकि we are not alone. We are interacting with environment. Environment में यहाँ पे क्या आ रहा है? Environment में आ रहा है तुम्हारा society. What and all coming under environment? In environment it is coming as society. In environment it is coming as family, friends, neighbors, सब कुछ आ रहा है. ठीक है? तो पर्सनल जो हमारा ग्रूमिंग हो रहा है, जो हम सोसाइटी से सीख रहे हैं, वो हम कैसे, वही हमारा बिहेवियर डिटरमाइन करता है. तो जो हमारा बिहेवियर होगा
व्हाट इज आवर बिहेवियर, हम कैसे लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, मीन्स हाउ वी आर इंटरेक्टिंग विद द पीपल, हाउ वी आर टॉकिंग विद द पीपल, इट डिपेंड्स अपॉन पर्सनल फैक्टर। एंड पर्सनल फैक्टर जो है वो इंक्लूसिव है। इंक्लूसिव का मतलब है यहाँ पर कि ये जो है हमारा अपना जो अंदर का मीन्स इनसाइड पार्ट को डिटरमाइन करता है, जो हमारे कोग्निशन, जो हमारे थिंकिंग कैपेसिटी को होल्ड करता है। तो मतलब क्या है कि कोग्निशन क्या है, एक लर्निंग एक्सपीरियंस है। व्हाट इज कोग्निशन? कोग्निशन, कोग्निशन मीन्स एक लर्निंग एक्सपीरियंस है। तो ये लर्निंग एक्सपीरियंस हम कहाँ से लेते हैं? ये लर्निंग एक्सपीरियंस जो है हम बचपन से अपने फैमिली से लेते हैं, अपने नेबर से लेते हैं। मीन्स दिस लर्निंग we are gathering from family, we are gathering from neighbor, that means we are gathering all these informations from social factors, understood? तो वो जो हमारे neighbor, relative सब कुछ है वो हमारा environment के अंदर में आएगा including the family। but जो personal factor है, जो हमारा personal है, वो है जो हम देख करके सीखते हैं। मतलब कि हम जब सबको देखते हैं कि हाँ भाई वो ऐसे बिहेव कर रहा है, वो ऐसे बिहेव कर रहा है, मतलब हमको अपना लॉजिक भी लगाना होता है। वी हैव टू अप्लाई आवर ओन लॉजिक कि वो ऐसा कर रहा है तो जरूरी नहीं है कि हम भी वैसा करें। तो सही गलत मतलब सारा पैरामीटर्स को सीख करके, मीन्स वी आर वाचिंग ऑल द पैरामीटर्स दैट दिस इज गुड, दिस इज नॉट गुड, दैट इज करेक्ट, दैट इज रॉन्ग, everything we will see, and then we will fall into a final conclusion that comes under personal factor। okay, so personal and environment सब कुछ कहाँ जा रहा है? बिहेवियर पे। तो फाइनल जो तुम्हारा बिहेवियर डिटरमाइन करता है वो तुम्हारा पर्सनल लर्निंग। पर्सनल लर्निंग कहाँ से आया? इन्वायरमेंट से आया। वो और जो तुमने सीखा वो सब तुम्हारे इनफैक्ट किसको डिटरमाइन करता है? वो तुम्हारा बिहेवियर को डिटरमाइन करता है। ठीक है, अब बिहेवियर में कैसे कैसे होते हैं बिहेवियर? ये जो पर्सनल फैक्टर होते हैं ये पर्सनल फैक्टर कॉग्निटिव होते हैं। ओके, पर्सनल फैक्टर कॉग्निटिव होते हैं, सेकंड अफेक्टिव होते हैं, ओके, एंड थर्ड बायोलॉजिकल होते हैं। Understood? Third is biological. Third is biological. I hope till here it is clear. Come on, say, is it clear till here कि cognition के लिए जो cognition क्या है? एक type of learning है। जो experience हमारा है वो हमारे behavior को determine करता है। ठीक है, तो जब कोई बच्चा स्कूल में है, मीन्स इफ एनी चाइल्ड इज इन क्लास इन स्कूल, मीन्स इन लोअर ग्रेड अपर ग्रेड, सो वो जो लर्निंग, व्हाट लर्निंग ही इज एक्सपीरियंसिंग, दैट लर्निंग ही विल एक्सपीरियंस फ्रॉम वेयर? दैट लर्निंग ही विल एक्सपीरियंस फ्रॉम स्कूल, फैमिली, एवरीथिंग। और वो जो लर्निंग है वो उसका पर्सनल फैक्टर है और वो कहाँ से गैदर कर रहा है? इन्वायरमेंट से। इन्वायरमेंट सोशल है, तुम्हारा इन्वायरमेंट फैमिली, रिलेटिव, स्कूल सब कुछ है और वो फाइनली उसका बिहेवियर डिटरमाइन कर रहा है। इज इट क्लियर टिल हियर? एनी डाउट इज देयर? कैन यू से एवरीवन? सो फर्स्ट ड्रॉ दिस वन, कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड बायोलॉजिकल। You just say yes, understood, not understood. I will explain it one more time because from here most of the questions, because cognition is one of the most important mental capacity. What is cognition? Cognition means action or process. What is cognition? Cognition means action or process of acquiring knowledge. Okay, acquiring knowledge. Cognition का मतलब क्या होता है कि हम वो काम करके, वो प्रोसेस करके एक नॉलेज गैदर करते हैं। अंडरस्टूड ना शर्मिला? वेरी गुड। सो हम वो प्रोसेस गैदर करते हैं। प्रोसेस का मतलब यहाँ पे क्या हुआ यार? प्रोसेस का मतलब हुआ कि अच्छा अभी 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 हमको एक पेन मिला है तो पेन को ले करके लिखना शुरू करना है। मिस आई गॉट अ पेन, आई हैव टू राइट विथ इट, दैट्स एग्जैक्टली वन पार्ट।
सेकेंड इज कि उसका अंडरस्टैंडिंग, पेन को पकड़ना कैसे है वो भी कॉग्निशन में आता है, मतलब पेन ले तो लिया, अब इसको यूज कैसे करना है वो भी अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करता है। उसके बाद एक्सपीरियंस, जब पेन को पकड़ा तो हैवी है कि लाइट है वो उसके एक्सपीरियंस में आ गया। नेक्स्ट सेंसेस, कि जब उसको टच किया तो पेन फील कैसे होता है, वो सब जो है वो कॉग्निशन में आता है। आई होप एवरीबडी माइट हैव अंडरस्टूड कि व्हाट कम्स अंडर कॉग्निशन। कॉग्निशन का मतलब क्या है, तुम्हारा जो नॉलेज, व्हाट नॉलेज यू आर गेनिंग, कैसे गेन कर रहे हैं नॉलेज को, अपने अंडरस्टैंडिंग से, अपने अंडरस्टैंडिंग से, अपने एक्सपीरियंस से जो नॉलेज गेन कर रहे हो, अपने सेंसेस के थ्रू, सेंसेस के थ्रू। वाई? बिकॉज यू आर टचिंग अ पेन। ओके, तो पेन को टच करना है, पेन को फील करना है, पेन को कैसे उठाना है, पेन से कैसे लिखना है, ये सारा जो है वो हमारे पर्सनल एक्सपीरियंस पे आ रहा है। तो ये जितना सारा फैक्टर्स जो है हमारे पर्सनल एक्सपीरियंस पे आ रहा है, हमारा लर्निंग, हमारा अंडरस्टैंडिंग में आ रहा है, वो क्या हो जाता है, वो कॉग्निशन हो जाता है। समझ में आ गया? अगर समझ में आ गया तो क्विकली यस करो ताकि मैं आगे प्रोसीड करूं। ठीक है, नोट्स हमेशा ग्रुप में मिल जाएंगे, जो इम्पोर्टेंट मैथ्स का पार्ट है वो भी ग्रुप में मिल जाएगा, सब कुछ तुमको ग्रुप में मिलेगा, बस तुमको उसको अच्छे से देखना है, पढ़ना है और उसको तुमको राइट डाउन करना है। ठीक है, वरलक्ष्मी अंडरस्टूड? सुपर। नाउ अंडरस्टैंड करो कि कॉग्निशन से होता क्या है। सी, आई टुक अ पेन, I holded the pen, I am writing with the pen. This is exactly one process and it determines my behavior. It is determining the behavior that कि okay, I know how to hold a pen and how to write. समझ में आया? इतना दूर तक तो समझ में आया कि पेन को उठाना कैसे है और लिखना कैसे, बट इससे होगा क्या, इससे सीखोगे क्या? पेन को लेके ले लिया, लिख लिया, समझ लिया, बट इसके बाद उसको और आगे कैसे प्रोसीड करना है। तो रुचि बताएगी कि इसके बाद इसको क्या कर सकते हैं, इससे हमको क्या मिलेगा, मतलब पेन उठा लिया, मतलब बच्चे को क्या सिखा सकते हैं इससे, अगर बताएगी तो। मीन्स इफ आई टुक अ पेन, आई होल्डेड अ पेन, आई रोट विद द पेन, बट व्हाट पर्सनल एक्सपीरियंस आई एम गेनिंग विद द पेन, दैट इज ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट। इससे पर्सनल एक्सपीरियंस मिला क्या, ये बताओ। सोच के बताना क्या मिला पर्सनल एक्सपीरियंस। पेन को उठाया बच्चा, लिखना शुरू किया, उससे उसको मिला क्या? क्या लगता है, मतलब क्या मिल सकता है बच्चे को अगर बच्चा एक पेन को उठाया और उसको लिखा। मीन्स अ चाइल्ड टुक अ पेन and try to write with the pen, means what the child, everyone please, if you will type and write now, then you will understand, because this is exactly, see, pedagogy looks very easy, but pedagogy is not so easy, because in this they will ask what is concrete behavior, what is abstract behavior, they will ask multiple questions, and you know what, in Ctet it will become very difficult for you to analyze and write because of many different factors. So यहाँ पे ना तुमको आंसर करते जाना है, you need to be very highly active to understand and answer the question. यहाँ पे कोशिश करो कि आंसर कर पाओ, सो प्लीज टाइप करके आंसर करो, फिर हम डिस्कस करते हैं इन ग्रुप इटसेल्फ, वी विल बी डिस्कसिंग। Okay, so tell me what answer you are thinking, that if a child is taking a pen and child is taking the pen and start writing it, you know, with taking a pen and started writing, the child will get two things. One is concrete. Concrete means कि pen is existing, pen is existing, yes, new to it, very good. So that is one thing, that it's an experience. See, very good Sharmila, next time you say they got an experience, understood Sharmila? That's a concrete experience. Concrete experience means ki how I have took, I took this pen, means the pen is existing, so this is existing, very good. Child gets an experience in writing. How should the child hold the pen? Very good. Learn how to utilize an object. Three of you now, very near to the content. Super, nice. This is what you have to analyze as a teacher. Got it? So when you will be in pedagogy, आप हिंदी में भी टाइप कर सकते हो, आप इंग्लिश में भी टाइप कर सकते हो.
whatever you will type in Hindi, I will convert in English. So you need not to worry. बिल्कुल सोचना नहीं है, बस पढ़ना है, ठीक है? So you understand one thing, very nice understanding. So the teacher has to understand that exactly the child is getting an experience, and that's very good. The child is getting an experience. तो चाइल्ड को क्या मिला? एक एक्सपीरियंस मिला. किस चीज का एक्सपीरियंस मिला? एक कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस मिला कि पेन एग्जिस्ट करता है. किस चीज के लिए मिला? For what the child got an experience that the pen is only used for writing. Got it? I can't take the pen and eat because it is not for eating. The pen I have taken personal experience. Very good, Ruchi. This is what the personal experience is. Very nice. इतने देर में तुमने सीधे हिट कर दिया डायरेक्ट टारगेट को. That is the personal factor. Understood? ये है personal factor. That means what? The wholesome experience. द होलसम एक्सपीरियंस जो उस बच्चे ने गैदर किया वो हुआ उसका पर्सनल फैक्टर. मतलब पेन को उठाना, अवेयरनेस, इफेक्टिवनेस, बायोलॉजिकल, हर कुछ. सो कभी तुम देखोगे कि छोटा बच्चा जो है, व्हेन अ स्मॉल चाइल्ड इज देयर ना, दे विल टेक द पेन एंड दे विल टेक इनसाइड माउथ बिकॉज फॉर देम एवरीथिंग इज फॉर ईटिंग. For them na, they feel gripping of pen. Very good. Personal experience. It also comes under personal experience. Absolutely correct. सो हेयर पर्सनल एक्सपीरियंस आता है. जहां पर भी हम कोई काम करते हैं वहां पर्सनल फैक्टर इन्वॉल्व होता है. हमारा पर्सनल फैक्टर जो है या तो अच्छा होगा या तो बुरा. मीन्स वॉट एवर वी हैव गेन्ड द एक्सपीरियंस, इट माइट बी रॉन्ग और इट माइट बी राइट, इट माइट बी गुड और इट माइट बी बैड, बट दिस एक्सपीरियंस will decide our behavior. Understood? This personal experience will decide our behavior. Like when I will eat first time chocolate, the experience was good because I took a chocolate and took in my mouth. It was very sweet and it exactly touched my senses. So 100% I am having a good feeling. So since the senses is exactly getting served by it, so what is the good thing here is you will have a smile in your face. Wow. But when I will give you bitter gourd in your mouth, what will happen? You will not have a smile in your face. What you will feel? You will feel it is not at all soothing your senses. So what you will make? You will make funny faces. Correct na? You will make like, oh, it is a bitter gourd and it is not good. Understood? So that time the faces, the personal experience, the personal factor, everything will change. Yes, ग्रॉस मोटर इनहेंसमेंट. एब्सोल्युटली वेरी गुड रुचि. अब तुमने सही हिट करना शुरू किया. तो यहां पे ना जितना फैक्टर्स है, no, this is not for 9th, this is for CTET examination, this is for teachers examination beta. Okay, so that is exactly the gross factors. So here that experience will be exactly telling you to take the thing again in mouth or not. Understood? So that comes the personal factor. Very nice. So that was, I hope till here you have understood. So in the personal environment interaction human belief, तो हम एक बार देख लेते हैं. We are going to check क्या क्या चीज हमको सीखना है और पढ़ना है. ठीक है इसमें. So now look here. See, in the personal environmental interaction, human beliefs, ideas and cognitive competencies are motivated by external factors like a supportive parent, stressful environment or a hot climate. See, look here, personal environmental interactions. Okay, तो हम यहाँ पे ना एक चीज सीखेंगे. ओके हम यहाँ पे एक चीज सीखेंगे. जो हमारा पर्सनल फैक्टर्स है ना, जो हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस है, वो कहाँ कहाँ से आता है. देखो हम जो बिलीव करते हैं ना, what we believe. So I'm just going to ask one question from Varalakshmi. Varalakshmi, if I believe that I am a monster, okay, just understand, I'm a monster, I will believe that I'm a monster. If I believe I'm a monster, will it change my behavior? Will it change my behavior? Means I believe I'm a monster for some time. Will it going to change my behavior?
Is it going to change my the total supportive factor that I am a monster? Means how should I be able to interact with the part? Come on, say anyone. So if I feel I'm a monster, Rakhi, are you there in the group? If I feel I'm a monster, that means what? ये हमारे belief को कैसे change करेगा? How it is going to change our belief? Think and say. Think very nicely and then answer. No need to panic. Just a simple answer is also okay. Like if we are thinking that I'm a monster, if I am thinking I'm a monster means how it is going to change my belief. How it is going to change my belief. If I'm thinking I'm a monster, then how it is going to change my belief. Come on, come on, come on, you can do it. यस सर्टनली वेरी गुड रुचि बट कैसे अफेक्ट करेगा वो तुमको सोचना है क्योंकि जब भी पैडागोगी के क्वेश्चंस आएंगे व्हेन एवर दे विल आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम पैडागोगी ना लाइक दे विल बी आस्किंग मोर फैक्टर्स yes they'll be asking more factors they'll be asking like if अगर बिलीफ चेंज हो रहा है तो बिलीफ चेंज होने से तुम्हारा क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा बॉडी लैंग्वेज में कैसा इफेक्ट पड़ेगा तो वो जो तुम्हारा स्ट्रक्चरल फिजिकल इमोशनल स्पिरिचुअल वॉट एवर कंटेंट चेंज इज देयर वो कैसे तुम्हारे अंदर मीन्स वॉट एवर कंटेंट इज इनसाइड यू how it is changing first so everyone start typing and writing the answers then only you will be able to understand that the answer coming is correct or wrong okay so first we need to check ki what answers I'm giving is certainly I will start behaving like monster absolute this is exactly we will not be able to learn or understand anything yes that comes under behavior super both of you are absolutely correct because see if I feel I am monster I will behave like a monster and then our understanding and our growth will get affected that's the most major section of learning of cognition understood so cognitive effects will be telling like कि if I will feel what I believe that I will change that's the most important part तुम लोगों ने दोनों ने you both have hit the correct part that what I will believe I will change and the change in factor will affect our total learning process very good so if I feel I'm a monster it will affect my mental capacity mental learning effect and it will affect my future content for interaction so I will be behaving like a monster with the other people absolute super yeah super very good so now we will be going for the next part please external factors can alter the way the individual display the behavior. Anybody explain this? External factors. What can be the external factors? First to understand. What can be the external factor? External factors can alter the way the individual displays the behavior. External factor means what? The way we interact with the environment. तो इसको सोच करके you answer this point. External factor can alter the way the individual displays the behavior. External factor can alter the way ऊपर लेते हो external factor can alter the way the individual displays the behavior. The way the individual displays the behavior. इसका मतलब क्या होता है कि whatever is outside you means external means मेरे सामने एक बॉटल है तो वो external factor हो गया मेरे पास एक पेन है means I am having a pen environmental factor will change I will like to interact with those person who will support my belief absolute very good Ruchi second hitting part so listen so when you will be interacting with someone that someone or something or some object so when you will be interacting with someone something some object it will change your individual belief and behavior both the things will be changed
your individual belief, your behavior, everything will get affected. Very good. So here external factor can change your way how you are displaying, people surrounding you, climate change, everything will interact. That comes under external factor, and it will change your belief. And you know what, everything comes under cognitive effect. Okay, so here the cognitive sections can be able to interact and change your personality, change your perceptions. So only we are putting so much of stress for a child to have that individual surrounding change. So only we are exactly for KG children, we are drawing some apples, some what you call some symbols, some these things, because when they will be seeing their surrounding, they will be understanding that these things are there. So more they will say, the more they will learn. Okay, so tomorrow's class I will be discussing about next factors. So please tell me the time schedule. I will be taking time in that time when all of you will be there, and I will be able to interact with you. And cognitive part tomorrow we are going to carry forward and finish. And tomorrow we are going to solve some questions, 10-15 questions related to cognition we are going to solve. Is it okay for everyone? Bye. Bye, Ruchi. Today it was a very nice performance by all of you. Nice. Bye.